Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great and enjoying the weather. Yes? Okay, so Surbhi is not available this week, and so I thought that I should share some art and craft with you. Today I'm going to make a beautiful envelope which is just a 5 minutes DIY, and I'm sure you all will like and will make it. So let's start. So you can see these are the beautiful envelope, right? और ये है market से जो हमें मिलता है, the same. Okay? Because sometimes what happens if you do not get any envelope, what you do? You have to wait or you have to go to the market. But आज हम घर में बनाएंगे और इतना सुंदर envelope है, देखिए आप. तो the material required is we need A4 size sheet, any color of your choice, origami sheet, any color again, glue, and we need scissor. So let's start. So the first step is to take this A4 size sheet and just fold it half. So friends, you can see how I am making this envelope. You can try at home. So again, one more half. So it will be like this, right? Now the next step is, let me just do that and then I'll show you. बहुत ही easy है ये. You can try and I'm sure you will like it. तो आपने just have to make these type of folds. Okay, it's easy. And now the next step is, पहले मैं इसे कर लेता हूँ, then I'll show you. Just 5 minutes DIY, 5 minutes activity. तो आपने क्या किया? You have folded like this, right? You can see here, and again same here. Okay. Now the next step is, fold it till here. I will show you. Okay. See, this one we just fold it here till here. You can see here. Okay. Now just fold it from here like this. I can show you here. So you just fold it here and then fold from here. Open this. Now it's a little bit tricky, so please check this point. Okay, please see how I'm doing it. So आपने ये वाला जो point इसके अंदर करना है, right? इसको इसके अंदर कर देना। और ये जो है इसको आपने बाहर करना है। I'll show you just a moment. ये देखिए, आपने जो ये पॉइंट्स हैं इसको इसके अंदर कर दिया है, इसको बाहर निकाल लिया आपने, जैसे आपकी एनवेलप बन गई, राइट? और लास्ट स्टेप इज, इसको आप ऊपर से फोल्ड कर दीजिए, ये आपका एनवेलप बंद भी हो गया. देख रहे हैं आप, एनवेलप क्लोज हो गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, क्योंकि ये यहाँ से पॉइंट्स ओपन है, you can see here, so you can just put some glue here. और इसको आपने सेव किया, just put some glue here. And just leave it for 2 or 3 minutes ताकि ये ड्राई हो जाए. तो फ्रेंड, जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, when it's completely dry, you can see here, ठीक है? अब इसको डेकोरेट करेंगे, जैसे मैंने इस एनवेलप को डेकोरेट किया.
Now you can see how beautiful it is. Okay, now आपने जो ये आपका एनवेलप है, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। और सिमिलर वे आप एक छोटा सा यहाँ पे जैसे मैंने लगाया है, एक छोटा सा फैन यहाँ पे आप और भी लगा सकते हैं ऐसे। और ये शीट ले लो, इसको एक स्क्वायर पीस उसका आप कट कर दो, स्क्वायर पीस ले लें। एंड अगेन उसको एक फोल्ड कर दो। इसे कट कर दो, ट्रायंगल्स में कट हो जाएंगे। ये आ गया ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल। अब इसका भी ऐसे ही फैन बनाते हैं, सेम सिमिलर वे। और इसको भी आप ऐसे ही तो फ्रेंड्स, ये आपका एक छोटा सा फैन और रेडी हो गया है। इसको आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए मैंने पेस्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। See how beautiful it is. ये डेकोरेट भी हो गया और आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये बनाया था, नाउ ये हमारा प्रिपेयर हो गया है, इट्स रेडी। आप इस पे कॉइन भी लगा सकते हो, यहाँ पे कैन पेस्ट अ कॉइन हियर।